Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the weekly outlook of the indexes and sectors. So जैसे लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि निफ्टी हैज टू क्लोज अबाउ this level of 17,000 around 750. So 17,750 level easily Nifty ने close कर दी है this week. Though this week is quite volatile as again I will show you on a daily chart first. Right. यहाँ पे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया अगेन बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन की थी कुछ मार्केट में फिर से इंटरनेशनल न्यूज आई थी उससे कारण एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ एंड अगेन वो लेवल जैसे यहाँ पे एक रिकवर की थी ये जो बड़ा गैप डाउन था राइट ये जो गैप डाउन होके एक रिकवरी दी थी अगेन ये छोटा सा गैप डाउन होके फिर से रिकवरी निफ्टी ने दी है जो मैं बोल रहा था कि डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड जो शॉर्ट कर रहे थे यहाँ पे मैंने बोला था कि मत करो दे ऑल सफरिंग राइट ये फ्यूचर ऑप्शंस के चक्कर में बहुत माइंडसेट चेंज हो जाता है एंड यू कांट थिंक रैशनली बिकॉज ऑफ द फियर एंड द पोजीशन साइजिंग तो फर्स्ट ट्रेंड को स्टडी करना सीखे देन आपकी पोजीशन साइजिंग आप बढ़ाओ क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं रहेगा देन यू कांट ट्रेड. Anyways, that will be another topic again. So we will focus on the levels. I will go to again the weekly chart of Nifty. So now what, right? So I have made few observations. First observations is support. निफ्टी ने काफी अच्छा लिया है जो हम लोग ने लेवल मार्क किए थे 17,200 के निफ्टी ने वहां से ब्रेकआउट दिया एक मेन ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक की अगेन रीटेस्टिंग किया वो ट्रेंड लाइन का यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ सो ये टेक्निकल जो चीजें है सारी करेक्टली प्ले आउट हो रही है देयर इज नो कंफ्यूजन इन बिटवीन कंफ्यूजन कहाँ पे होता है जब गैप अप गैप डाउन जब ओपन होते हैं तो पोजीशन साइजिंग जो रिटेलर्स की होल्ड नहीं कर पाते वो तो वहां पे उनको दिक्कत होती है अदरवाइज जो कैश में ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है दे कैन रियली लैंड आउट वेल एक्चुअली देयर ट्रेड ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था सेकंड ऑब्जर्वेशन ये वीकली क्लोज जो निफ्टी का आया है ओके दैट इज द सेकंड हाईएस्ट क्लोज आफ्टर जनवरी इफ यू सी ये जो क्लोजिंग थी 18,200 उसके बाद निफ्टी करेक्ट होके लोअर हाइज बना रहा था और जो ये क्लोजिंग जो आई है दैट इज द सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग आफ्टर जनवरी सो इट इज ऑलमोस्ट 9 months नाउ एंड 9 महीने बाद निफ्टी ने कोई अच्छी क्लोजिंग दी है सो दैट इज रियली अ गुड थिंग कि निफ्टी का ट्रेंड अब रियली पॉजिटिव है और निफ्टी जल्द ही उसके ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की अब कोशिश करेगा दो इट विल बी नॉट अ वन वे जर्नी ये यहाँ पे और वोलेटाइल थोड़ा दिखा के यही जाएगा बट इट विल ट्राई टू गो हियर if I calculate the distance between all time high and the current closing I guess it is almost around 5% only okay जो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है उससे निफ्टी सिर्फ 5% डाउन है तो सारे सेक्टर्स भी हम लोग देख लेंगे तो निफ्टी इज रियल इन गुड पोजिशन एज पर नाउ एंड ये वीक मुझे लग रहा है कि ये जो रिसेंट स्विंग हाई था निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए ये वीक में इट्स 18,000 लेवल एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट लेवल तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक निफ्टी को रेजिस्टेंस आएगा 18K का एक राउंड नंबर का एंड निफ्टी कैन स्पेंड अ फ्यू days around this level and 17,600 level right तो ये वीक के लिए मेरा होराइजन ये है कि निफ्टी विल ट्रेड बिटवीन 18,000 एंड 17,600 ये जो 400 पॉइंट्स का जो रेंज है निफ्टी कैन बी रेंज बाउंड इन बिटवीन दिस लेवल एंड इफ निफ्टी क्लोज अबाउ दिस लेवल देन हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिलेगा मार्केट में इट विल बी नॉट ओनली बाइंग पोजीशंस ऑफ द न्यू बाइंग पोजीशन बट जो शॉर्ट करके लोग बैठे हैं वो भी अपनी पोजीशंस कवर करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी और नाउ मेरा जो मेजर फोरकास्ट है वो है रेंज बाउंड प्ले करना चाहिए अदरवाइज देखते हैं कैसा अभी मैं अपडेट आपको देते रहूंगा तो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है अब मार्जिनली उसकी क्लोजिंग अराउंड वही रेंज में 14,400 का जो हम लोग ने मार्क किया था लास्ट वीक का वहां पे ही एक बैंक निफ्टी की एक क्लोजिंग आ चुकी है सो वी माइट सी अगेन सम वोलेटाइल और साइडवेज मूवमेंट इन बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो वेटेज है वो निफ्टी में ज्यादा होने के कारण निफ्टी भी शायद साइडवेज हो सकता है वीक राइट सो
बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना जरूरी है, बिकॉज एक वन डे खाली 2 वीक का ही करेक्शन बैंक निफ्टी में था, अदरवाइज ये जो रेंज है वो अच्छी चल रही है। एंड पीएसयू बैंक्स का जो सेक्टर है वो अच्छा बैकअप दे रहा है बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी नीड टू कंसोलिडेट अगेन फॉर अ फ्यू वीक्स। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में होगा, एंड देन यू कैन सी अ ब्रेकआउट अगेन इन बैंक। द नेक्स्ट सेक्टर इज अ मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर का एक ऑब्जर्वेशन जो है, जो फिबोनाची, जिन्होंने पता है, जिनको फिबोनाची के बारे में, उनके लिए तो काफी समझना आसान हो जाएगा। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो एक लेवल था, इफ इफ आई मार्क अ लेवल फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, तो मार्केट में एक बुल्स एंड बेयर्स का जो वॉर होता है वो इन बिटवीन 50 के लेवल में होता है, राइट। अगर ये 50 लेवल मैंने मार्क कर दी, तो इट विल बी लाइक हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास एम्प्टी केस, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई चीज यहाँ पे 0 के बाद 100 पे जाके अगेन 50 पे आती है, तो यहाँ पे सीधे सीधे दो व्यूज निकलते हैं। फर्स्ट व्यूज ये है, जो बियर्स लोग होते हैं वो सोचते हैं अब ये चीज 100 से 50 हो चुकी है, आधी हो चुकी है, मीन्स उसका हवा निकल चुका है, उसका ट्रेंड बदल चुका है, इसको शॉर्ट करते हैं, उसको सेल करना जरूरी है। ये होता है बेयर्स का माइंडसेट। तो बुल्स का माइंडसेट यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज 50% डिस्काउंट में हमें मिल रही है, सो हमें खरीदनी चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे बहुत एक वोलेटाइलनेस क्रिएट होता है कि दोनों ट्राई करते हैं। एक ग्रुप होता है वो उसको नीचे ढकलने के लिए कोशिश करता है, एक ग्रुप जो होता है उसको ऊपर ढकलने के लिए कोशिश करता है। तो मेटल में एग्जैक्टली यही हुआ। यहाँ से जो मेटल चला था वो नीचे आ गया था, इसके बाद अगेन इट बाउंस बैक टू इट्स 50% लेवल। यहाँ पे उसने 4 वीक कंसोलिडेशन दिया। 4 वीक कंसोलिडेशन इसलिए हुआ कि बेयर्स अगेन ट्राइंग टू पुश दिस इंडेक्स डाउन, एंड बुल्स जो सेल कर रहे थे वो सारा एब्जॉर्ब कर रहे थे ताकि उसको ऊपर ले जाए। एंड दिस वीक जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर 50% के ऊपर, ये जो रेंज था, राइट, 4400 एंड, ओके सॉरी, ये जो 4000 एंड 6000 का जो लेवल था, इसका इन बिटवीन जो 50% था, यहाँ पे निफ्टी ने एक अच्छा कंसोलिडेशन, निफ्टी मेटल ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया, एंड इस वीक की क्लोजिंग उसने ऊपर दे चुकी है। तो फॉर मी जो ये निफ्टी मेटल जो डाउनवर्ड चल रहा था, एंड उसके बाद जो सेल ऑन राइज का जो कंडीशंस था वो अभी इनवैलिड हो चुका है मेरे लिए। सो हियर ऑनवर्ड्स फॉर मी निफ्टी मेटल शुड बी बाय ऑन डिप होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस ये जो लेवल है, ये कंसोलिडेशन जो हुआ था, आई विल जस्ट कन्वर्ट इट इनटू अ डेली चार्ट। Okay, for a while I will delete this Fibonacci and I will simply mark this box here. Okay, तो जब तक ये बॉक्स का लोअर रेंज नहीं ब्रेक होता तब तक निफ्टी मेटल यू कैन प्ले अ स्विंग ट्रेड्स इन निफ्टी मेटल। ये लेवल जो है वो याद रखना, अगर ये लेवल टूट जाता है तो अगेन बेयर्स कंट्रोल में आ जाएंगे। फॉर अ वाइल आपका ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है कि यहाँ पे निफ्टी उसके अपर रेंज में ही 4 दिन स्पेंड कर रहा है। तो इट इज अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट द स्विंग ट्रेड्स इन द निफ्टी मेटल। तो ये हो गया निफ्टी मेटल का। देन निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा स्टिल मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है। बट ये टाइम अब अगर मैं देखूंगा तो ये जो लो है वो अब तक ब्रेक नहीं हो चुका है फॉर 2 वीक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम ये लो ब्रेक नहीं हुआ है नए स्विंग के बाद, राइट। तो फॉर मी अभी ये निफ्टी फार्मा का जो है एक बहुत क्रंच सिचुएशन में आया है, तो स्टिल आई विल अवॉइड फार्मा स्टॉक्स। व्हाई? बिकॉज देर इज अ रेजिस्टेंस, दिस ग्रीन जोन देर इज अ रेजिस्टेंस, प्लस दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऑल्सो देयर, राइट। तो एक ट्रायंगल बन चुका है, तो कहाँ पे तो डिसाइसिव मुझे क्लोजिंग चाहिए, इधर डाउन साइड टू कंप्लीटली अवॉइड फार्मा स्टॉक, और इधर द अपसाइड क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, टू कंफर्म द ट्रेंड चेंज इन द फार्मा सेक्टर, राइट। सो ये एक वॉचफुल आपको रहना पड़ेगा फार्मा स्टॉक्स में कि किस साइड क्लोजिंग आ रही है। सो आई विल वेट फॉर दिस वीक ऑल्सो, क्योंकि शायद और 1-2 वीक लेगा निफ्टी फार्मा में एक्शन आने के लिए, और 1-2 वीक लगेंगे। सो फॉर अ वाइल वी विल अवॉइड द फार्मा सेक्टर फॉर दिस वीक। तो नेक्स्ट बिग सेक्टर इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली। नाउ आईटी सेक्टर इज इम्प्रूविंग। शायद जो करेक्शन था वो एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम करके एक जो बोलते हैं वो खत्म हो चुका है।
एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी आपका बहुत कम, काफी कम रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे आईटी में। आई विल गो टू अ डेली चार्ट नाउ। सो ये जो करंट स्विंग था, आई विल डिलीट दिस जोन एंड आई विल जस्ट मार्क अ ट्रेंड लाइन हियर। करेक्ट। So ये ट्रेंड लाइन will be your stop losses in a IT stock. You can trade take IT swing trade this week. मुझे अच्छे लग रहे हैं। I will discuss one IT stock. इसके बाद दो IT stock में डिस्कस करूंगा। तो मेरे लिए ये जो डेली क्लोजिंग है, राइट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस क्लोजिंग। अगर ये डेली चार्ट अगर इस पे एक दो दिन और मंडे को अगर आईटी इसके ऊपर क्लोज दे देता है, राइट, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये भी क्लियर कर लेता है, या फिर क्या होगा, यहाँ से ये फिर से एक डाउनवर्ड देगा, यहाँ पे रिटेस्टिंग करके फिर उड़ाएगा। ओके, दो पॉसिबिलिटी है, बट आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, राइट। एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं देखूंगा, देन आई विल मार्क अ रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो हियर। लॉन्ग पोजीशन में ये पोजीशन से मैं इंडेक्स में ओपन करता हूँ, आईटी इंडेक्स में, तो मेरा स्टॉप लॉस है हार्डली 5%, राइट। मेरा जो रिवॉर्ड लग रहा है, अगला रेजिस्टेंस है, दैट विल बी अराउंड 12%। सो मुझे आईटी में यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छे खासे दिख रहे हैं आईटी सेक्टर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी आईटी स्पेसिफिक स्टॉक, बट एज अ सेक्टर मुझे ये अच्छा लग रहा है फॉर अ स्विंग ट्रेड। हाँ, मुझे और एक मैसेज आया था कि व्हाट इज स्विंग ट्रेड, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है स्विंग ट्रेड क्या होता है, सो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड कैसे इन्वेस्टमेंट और डे ट्रेडिंग से अलग है, एंड हाउ इट इज वेरी इजी एंड यू कैन गेट रियली गुड रिटर्न इन स्विंग ट्रेड विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो शायद ये लिंक में डाल दूंगा। तो फॉर अ वाइल मेरे लिए मेटल अच्छा है, मेरे लिए आईटी अच्छा लग रहा है, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्टर, एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर बहुत रन कंटिन्यूस दे चुका है, सो आई विल नॉट ओपन एनी न्यू पोजीशन इन एफएमसीजी सेक्टर राइट नाउ, बट yes, I am holding FMCG stock, especially ITC, with a good return and a Hindustan Unilever. So these two stocks I am holding right now with a good returns, and I will trailing those stocks in coming week. But no new positions in FMCG in this week. Uh, then we will go to a new index, that is a small cap 250. Small cap 250 is in really good position, and again this week closing in is already every week small cap 250 is making new closing, new higher closing. So it is really good for me, right? The structure is really good, and Nifty small cap will try to reach this earlier swing high around here. So we might see again a good weekly closing this week. So better focus on the quality small cap, and even if it is not closing a good closing here, because the we can see some shadows in this week, but yet the structure is really good, and even if you get any decline in small cap, right, it will be a good opportunity to add your positions here. Correct. So every like structure is looking good for me in the market, and I'm really happy with this structure. Next index is auto. Auto might spend some time this week. Wait, I will draw a box here. So we need to look out for a breakout in this in auto also. But auto parts are looking good to me. I will discuss one chart if time permits to me. So basically, auto is also looking good, but it is not that risk reward friendly right now. I will wait for some decline or some correction in IT, sorry, auto sector. Then I will open that position. Next structure is PAC. PAC is looking good. Again, I will mark a resistance line here. Correct. So this is a resistance, and Nifty PAC sector will try to reach here. Okay, then we will check how it is behaving, but currently is into a box, right? And if we get a breakout of this, then the target will be this range around this, so it will take around 5200 from here. So Nifty PAC sector is also looking good. It's clearly into a uptrend now.
Mid cap 150. Okay, we had seen small cap 250. Now we are seeing mid cap 150, and mid cap 50 is already reached its previous swing low, swing high. Sorry, it has closed above. Wait, I will delete all this data. The closing is already above this swing high and this swing high also, and might this swing high also, because this in this week this is just a high, but closing was a down. Correct. So this week closing is an all-time high for Nifty Midcap 150, which is a really good, right? Which is a really good. And if this swing high gets removed, first we will find some profit booking here. It might possible, but I think this time Nifty Midcap will create a new high. You will see a new higher closing again in this week. So better watch for Nifty Midcap quality stocks also. Next structure is PSU Bank. PSU banks are looking excellent, really excellent and in powerful trend now, and I am really happy to seek this kind of structures. Correct. This is a box, and Nifty PSU bank spends a week, right? From November last year, from November to this year September, almost a year. Nifty has spent a consolidation, big consolidation, and this big closing is all above this all year, like 1 year, almost a 10-month consolidation phase, right? So if we get a declining around this uh, zone upper end, this will be a really good buying opportunity again, and Nifty PSU banks will touch this swing high, okay, in coming weeks. So Nifty PSU banks also looking good, and it will help Bank Nifty to reach its new levels. Correct. So I will mark a different trend line from this. This will be a bigger trend line. So we will check how it is plotting. Correct. So now Nifty Bank will face some resistance also here and some support also from here. This will be a minor zone, and Nifty banks can spend some time here. So next consolidation like this, I need to see here, and then we can see a big breakout again. So this will be a price action for Nifty PSU bank sector index. Then the next sector will be energy sector. Energy sector is looking excellent again, right? It is heading towards its all-time high. So you should watch for a Reliance as well as a ONGC. These are the major uh, contributor to the energy sector. So I am watching these two stocks, and there are many power stocks also, which is a part of this energy constitute. So power stocks also doing good actually. I have do a good 30-40% return I got in a JP Power. Already I shared those in the paid stocks group. So that was a really good swing trade. Nifty VIX is really good indication. It is below 18 or and 20 level. Okay, so it is a really good that no fear is in the market right now. So it's a good thing for me. USD INR is a little bit concern, as it is already hitting, always hitting a all-time high, right? Every week, like, either opening or a high, it is in this range. So I need to be sure that the this high shouldn't be get removed, right? And the weekly closing shouldn't be above this. I don't want that. I want that this range should be break down. Then only it is a really good Indian market, especially for a banking sector. But anyhow, the FIIs are doing coming back again with the money flow, so dollar is not that much concern. Yes. So this is all about sectors, right? So currently, again, I have a small announcement before going toward the swing trades for this week. That new batches are going to be started this week. So those who really want really secrets of the swing trading, they can really approach me. And trust me, it is the simplest training. It will be a simplest training that you will experience. And we will focus on the scanner, that how to be there at the right time and the right price, correct? So I am sharing my contact details in this link, so you can check and you can contact me if you really want to earn good in the market without taking any risk like futures and options. So yes,
So let's move for the stock. My first stock is a LNT LTI Infotech. So this stock has been correcting. First, I will show you the correction happen in this stock. So stock has corrected exactly 50%, which the logic I have shared right earlier, like bulls and bears. So this 50% correction from the all-time high is a really good opportunity at that time, and I already shared that trade here, right? Around 4,100, I took one trade in LTI, right, after crossing this level, and I booked a small profit around 4,600, and I am again now want to enter into this trade because what is happened here, that breakout happened and again it retested, and as is a weekly trade, the confirmation chances are higher, right? Again 4 week correction happened, and now stock is heading, so my stop loss is very low at this point. Okay, my stop loss will be only few percentage, so I will convert this into a daily time frame. Look at this. For swing trade, my stop loss will be only 6%. Max to max 6% will be my stop loss. And my target will be around 12%. So if I calculate 12% from this level, I can see it will be a very easily achievable. And I think this stock will go to this earlier support. So 20% from here, I'm expecting this in LTI. And my risk is how much? Only 5 to 6%. So how will be my strategy? First, I will eye the 1:2 risk reward ratio. That is around 12%, right? That is in this zone. So first, I will book my 50% profit at 12%, and remaining 50% profit will be at trailing, and I will book entirely at here 5,500. That will be a 20%. So this structure is looking excellent for this week. Price action is supporting, volumes are supporting, correct? And the price is at very low risk area. So it is the skill to find the low risk area stock. Okay, one way is to find see the charts of entire 2,000 stocks, and one way is to create a excellent scanners, right, with the logic, and that is a skill you need to develop, that find the right stock at the right time. Then second stock is the emphasis. This stock is also corrected a good from almost 44% from its all-time high, and it is lying now at very low risk setup, correct? So the risk is very, very, very low in this area. So if I mark, if I open a long position from here, again LTI kind of setup, only 6-7% risk is here. You can set a little buffer around 7%, and I will mark a 14% from here. It will be exactly this swing high, earlier swing high, correct? So here again I am finding my 1:2 risk reward, and I think the targets are more than this. I am thinking that the stock is trying to go here till here. That is a 25% return. Okay, so this is the second stock I am finding really good risk reward setup after LTI. Then there is a stock is Exide Industries, which I already discussed many times. That on please do watch on this stock, and in this week it has given a good breakout, correct? So now I will take entry into this stock with a stop loss of around 160, 155. This will be my stop loss, and my entry point will be this, and my target will be around this high. 200 point will be my target. Why? Because the volume is already entered into this stock, and all this like exactly 1 year the stock is into a consolidation mode. So that is the biggest advantage. Like I like this kind of big consolidation happened, because you can see a good run in a short time after the breakout, and again this week you can see the second highest volume, correct? This volume is the second highest volume after exactly after a year.
So these are the very key points you need to understand while studying the chart. It is not only seeing the candlesticks, right? You need to be come to the conclusion why this things happening, correct? So my target will be how much? 200. 200 will be my target, which is around 30 rupees from here, and my risk will be only 10 rupees or 12 rupees. So it's kind of 1:3 risk reward ratio trade. Again, good for me. So I'm entering into this trade this week. Then there is a Zensar tech, which I have given around 227, 230 level, and it is closing at around 235. Again, this stock is corrected a lot. This stock is corrected almost 60% from its all-time high, right? Which is a really good correction and a good entry point. And what's happening after that? Correction happened, and after that, the stock is consolidating for a what? For a few weeks now. So it is again a really low risk reward setup. Ideally, it is not in uptrend. First thing I need to clear that it is totally not into uptrending stock. Okay. So, but what is a attractive thing here, that risk is very low. Yes, I am doing a contradictory trade here, right? That the stock can go for some higher points, and again it can go down. Here also it try to consolidate, and again it gives a breakdown. Again, it is possible that stock can break down from here. But I'm I'm considering those risks, and then only I'm taking position. I haven't take position here. I haven't take position here, right? Why I'm taking position here right now? Because the risk is very low, very negligible risk. Even if I lose, I will lose very little, and that is a key in the market. But if I see the upside, that is a really attractive for me. So my risk is very low at this point, and if the stocks, that is a 250 level, get breached, I will mark this levels also for you. If you want to be safe, then take trade after this level get breached. And if you are really want to take a risk at a very low risk area, then you can take the trade here also. Risk is already very low, correct? So I will check the risk here. It's hardly 7%. Again, it is a really good for swing trading. And what is the reward? I can see a 20% upside from here in Zensatech. Stock at least try to go around 280, 290. We'll try to go there. And then we can find some selling. Correct. So again, I am finding 1:3 risk reward ratio here. So both this all three stocks and one auto stock, like three IT stocks and one auto stock, is looking good for me for this year. So you can plan your trade according to that. Correct. And all these stocks are which I have discussed, it's my study. It is not a recommendation or anything to you. So if you have any doubt, you can ask your financial advisor before taking any position in the market. Correct. So thank you. That's it for the week. Have a safe week again.